हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यार्थी। आज आम देखा क्लास 9 रो इंग्लिश टॉपिक टी हेउची दी नोबेल नेचर तार गोटे प्रैक्टिस सेट नहीं आसे। ओके, ये अदर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आम वीडियो सब सीक्वेंसली ऑलरेडी अपलोड किसी हो जाइए एवं आउ किसी हो जीवो। ओके, वीडियोटी जदि भल लगे हेल्पफुल हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करेंगे। ओके, इट इज योर ड्यूटी। बर्तमान स्टार्ट करिया। क्वेश्चन नंबर 1 देखिबा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट इन द पोएम द नोबेल नेचर। ओके, नोबेल नेचर रे जो पोएम टी अच्छी तार पोएट किए, तार आंसर है बेन जॉनसन। ओके, देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द पोएट द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट इज डैश। क्वेश्चन नंबर 2 रा आंसर है लिली। ओके, देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, द लाइफ स्पान ऑफ एन ओक ट्री इज डैश। जो ओक ट्री लाइफ केते, तार आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 रा आंसर है 300 इयर्स। ओके, देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 4, ए लिली ऑफ डे इज फेयरर इन डैश। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर है मे। ओके, मे मंथ रे। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 5, although it fall and die that night, here it refers to whom। एठारे इट कहा को रेफर करुछि। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 रा आंसर है ए लिली ट्री। ओके, देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 6, इन द पोएम द नोबेल नेचर द वर्ड ड्राई ब्लड एंड सियर रेफर टू डैश। क्या रेफर कर तार आंसर होची एन वेक। ओके, देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 7, although it fall and die that night, it was the plant the flower of light। ओके, एड आंसर प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। ओके, देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट इज रेफर टू। क्या रेफर करुछि, तार आंसर है लिली। ओके, देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन स्मॉल propositions we just dash see। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर है ब्यूटीज। ओके, देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, द लाइफ स्पान ऑफ ए लिली इज। लिली रा लाइफ स्पान केते, तार आंसर है 1 डे। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन थिला वेक रा केते 300 इयर थिला। ओके, एटा होची लिली रा 1 डे। देखिबा 11 क्वेश्चन, द लाइफ स्पान ऑफ एन ओक ट्री इज
मे बी एटा रिपीट हो जाइए ओके 300 years ओके देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 12 it is not growing like a tree what does the word it refers to ओके तार आंसर होउची 12 रा आंसर होउची वेक ओके इट एठी रेफर करूची वेक को देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 13 in the poem the noble nature blood means कौन 13 रा आंसर होउची या भितर कोडा भितर मीनिंग्स नुहे ओके नॉन हव आंसर देन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 what does it refers to in the poem what does it refers to in the poem it कहा को रेफर करछि in the poem रे ओके तर आंसर हेउछि man's life ओके देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 15 which large tree is described in the poem the noble nature जो कहा को कहा जाय नोबेल नेचर 15 आंसर होची लार्ज ट्री रो आंसर की होची ओक ट्री ओके देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कैन लाइफ बी इन शॉर्ट मेजर्स तर आंसर होउची क्वेश्चन नंबर 16 आंसर होउची परफेक्ट ओके व्हाट कैन लाइफ बी इन शॉर्ट मेजर तर आंसर होउची परफेक्ट लाइफ ओके देखिबा क्वेश्चन नंबर 17 who fall and die the same night तर आंसर होउची लिली ओके देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 what in the poem is described as beautiful but short lived तर आंसर होउची लिली ओके देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 19 which is the large tree with the कोन गोटे कटि जाइछि wood in the poem लास्ट ट्री माने वेक ही हबो ओके देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ओके एति ही थिला वीडियोटी रे गोटे प्रैक्टिस सेट नै आस्थिले ताको डिस्कशन कले ए भली अदर प्रैक्टिस सेट मध्ये हमें ऑलरेडी अपलोड किछि हे जाइछ आ किछि अपलोड हे जिवो थैंक यू वेरी मच all of you see you next time in next video okay